आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। आज की प्रमुख स्टेम पॉपुलराइजेशन जानकारियाँ। विज्ञान के दुनिया से आज की जानकारियाँ। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सौर तूफान। साल 2024 में क्या क्या होगा खास, जाने कब दिखेगा ये नजारा। खगोलीय घटनाओं के लिए साल 2024 बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साल 2024 में उल्का वर्षा, सौर और चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे। सूर्य अपने सोलर मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण सौर गतिविधि भी बहुत ज्यादा होगी। इस कारण ध्रुवों से दूर एक ऑरोरा देखने को मिलेगा। खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 2024 एक सुनहरा मौका लाया है, क्योंकि इस साल आकाश में उल्का वर्षा, सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे। लेकिन इस साल का सबसे प्रमुख आकर्षण 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण है। भारत में यह नहीं दिखेगा। हालांकि अगर आप कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में रहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यह एक पूर्ण ग्रहण होगा, यानी इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक देगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर को दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण भी होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान आसमान में आग की रिंग दिखाई देगी, क्योंकि बाकी सूर्य को चंद्रमा ढक देगा। सूर्य ग्रहण के अलावा चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। 24 से 25 मार्च को पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण 17 से 18 सितंबर को लगेगा। भारत के कुछ हिस्सों में ही यह चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बहुप्रतीक्षित प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ हाथ मिलाया है। ये भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर इस साल सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार है। ये मिशन एक कृत्रिम ग्रहण का अनुभव करने वाला महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिस पर दुनिया की निगाहें हैं। विज्ञान की दुनिया से आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अंतरिक्ष में नकली सूर्य ग्रहण लगाने जा रहे हैं यूरोपीय वैज्ञानिक। इसरो लॉन्च करेगा यूरोप का प्रोबा 3 मिशन। जानिए इसके प्लान। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बहुप्रतीक्षित प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ हाथ मिलाया है। ये भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान
पर इस साल सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार है। ये मिशन एक कृत्रिम ग्रहण का अनुभव करने वाला महत्वाकांक्षी प्रयास है जिस पर दुनिया की निगाहें हैं। साइबेरिया में पिघल रहा सदियों से बर्फ से भरा सबसे बड़ा गड्ढा। लोग बोले दिखने में लगता है पाताल का रास्ता। बटागाइका क्रेटर को लेकर रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि ढलान के नीचे कुछ स्थानों पर 100 मीटर गहरी मिट्टी है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की भारी मात्रा है। ये संग्रहित ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ रही है जिससे वातावरण में पिघली हुई मिट्टी गर्मी को और बढ़ा रही है। हवा के बढ़ते तापमान के साथ इस विशाल गड्ढे के और बढ़ने की संभावना है। इससे जलवायु परिवर्तन में भी वृद्धि होगी। रूस के साइबेरिया स्थित दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटागाइका पिघल रहा है। बटागाइका क्रेटर के पिघलने की घटना ने वैज्ञानिकों में चिंता बढ़ा दी है क्योंकि यह रूस के उत्तरी और उत्तर पूर्वी शहरों और कस्बों को खतरे में डाल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे न केवल रूसी कस्बों और शहरों को बल्कि पूरे प्लैनेट को भी खतरा है क्योंकि इसके पिघलने के कारण वायुमंडल में आ रही ऑर्गेनिक कार्बन की भारी मात्रा ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार परमाफ्रॉस्ट से मतलब उस जमीन या जगह से है जो लगातार कम से कम 2 साल तक 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से जमी रहती है। ये स्थायी रूप में जमे हुए मैदान बर्फ द्वारा एक साथ रखी गई मिट्टी, चट्टानों और रेत के संयोजन से बने होते हैं। नासा के मुताबिक परमाफ्रॉस्ट उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास के क्षेत्रों में सबसे आम है और पृथ्वी के बड़े हिस्से को कवर करते हैं। खास तौर से उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र के नीचे परमाफ्रॉस्ट है। जमीन जमी होने के बावजूद परमाफ्रॉस्ट वाले क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके नहीं होते हैं। स्टेम एम्पलीफायर। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर रमेंद्र सुंदर दे। यह वर्तमान में भारतीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत हैं। उनका वर्तमान अनुसंधान क्षेत्र है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट अर्थात ऊर्जा और पर्यावरण। So myself is Ramendra Sundar De. So I am working on energy storage and energy conversion devices. So mainly focuses on green energy sources. I finished my postdoc at Technical University of Denmark, and I did my PhD from IIT Kharagpur in the chemistry department. So my research area is renewable energy sources and energy storage technology. So actually green ammonia, this term came from here we do not generate any carbon. So you know the ammonia synthesis is a 110 years old method we are still following, which is Haber-Bosch method, where a lot of carbon we are generating or a lot of carbon dioxide emitting, you can say. So we have developed a new method by electrochemical approach. So where you will synthesize ammonia from nitrogen and there is no carbon emission will occur. That's called is renewable ammonia synthesis or green ammonia synthesis. And metal air battery, mainly we are working on zinc air battery. So where the mechanism you need some material which will be your active material, and that will show bifunctional activity for oxygen evolution and oxygen reduction. So here fuel is the oxygen which will take from air and the battery will run. So we have a prototype development in our lab for the zinc air battery. So during my PhD I started with electrochemical biosensing. I am a chemist, so whatever problem I choose that's based on electrochemistry only.
So then for postdoctoral I moved to the supercapacitor, because this energy storage devices is required at the moment, because when we are running renewable energy sources is needed. So supercapacitor can play a major role here because of their fast charge discharge process. But the main problem lies in this development of current collector and the active material. So here we have come up with a new idea that carbon, or in the sense of graphene, actually can act as a active material as well as metal current collector. So one material can do both the purpose. So we don't need any metal for these energy storage devices, and that is the main achievement. So we have also worked on geometry of the supercapacitor. So in plane supercapacitor we have developed, where you can have a lot of module like 20, 30, 60 modules together in a devices, so that you can generate a lot of voltages. Like in the lab we have developed 20 volt module of supercapacitor from laser irradiated graphene. So now we move to the ammonia synthesis part. At the moment our lab mainly working on metal air battery and ammonia synthesis. As I explained, the ammonia synthesis, ammonia is not only we are using it for fertilizer, it is also act as an energy storage material, because hydrogen is the only green fuel at the moment, which the main drawback with the liquid hydrogen is storage conditions. It needs cryogenic conditions to store the hydrogen. Whereas ammonia, we need only minus 30 degrees centigrade to store it. So if we can synthesize ammonia in greener way, we can replace hydrogen. So that is our main focus, so that we can have some nice approach or industrial scale ammonia synthesis to replace green hydrogen as a fuel. And in future, at least I can see in next 10 years, I want to work on this field only, because in India there is no such company available at the moment who are doing ammonia synthesis. So this is in the research scale only. In future, the same field I want to explore in other direction, like I want to convert, our group wants to convert actually nitrate to ammonia. So nitrate present in wastewater, and this is one field. Another is urea synthesis by electrochemical method, because nitrate from wastewater and carbon dioxide from industrial waste we can take together and can produce urea. So two waste we can combine together and can produce urea. That is our next approach in future we want to do. Indian industry, if we talk about, so at the moment almost no company or associated companies are showing interest, but no such company I can see at the moment who wants to fund for this project. They are still in the testing mode. If you develop something, if you have some thing in your hand, then only we can involve something like that. At the moment, very few people are doing in India as well as abroad. So in India, as far as maximum 3 to 4 scientists are involved in this. So we are the first in India who started work on this project and in inner approach. And globally also there are few groups who are actively involved in this project, but the number is not that much high if you compare with hydrogen. So this number should increase slowly. The number is actually increasing. I can see if I compare from the last 5 years before what it was and today what it is. So I can see at least 10-fold increase in the research level I can see. So I believe that a lot of people will gain interest and work on this, so that India also can do very good in this project. Very good number of patent as well as paper in this field. So we have published PNS, which is very high ranking journal. So we have published one PNS, 2 SES nano, 2 nano micro letter, and a few inorganic chemistry in this field. 2 patent I have filed. One is already published. So so probably we'll get. The patent will be granted soon. I hope that. So we have a lot of progress and a lot of achievement in this field. So if you think about common man, so first thing is in India is the agriculture. So this urea is the only things we are using agriculture sector, or I will say 60% of our
we are using as urea, actually urea or urea based product. So that means we need this type of product in our daily life. But as I told, the urea we synthesize from ammonia, and that ammonia is synthesized from hazardous process, which is carbon emission is the major problem there. So if we succeed or if we can synthesize this industrially, so it will be very, very helpful for common man. I mean, societal impact is huge in this project. Yeah, nitrogen is actually known as inert gas. So it was not known till to consider 5 to 6 years ago. Nobody can think that we can reduce nitrogen electrochemically, because we use nitrogen gas in the lab as an inert gas. So now what we have done is we could break the nitrogen-nitrogen bond and can produce ammonia. This is the biggest achievement or advancement in the science if we consider in this perspective. So nitrogen-nitrogen triple bond, which was inert or which was very difficult to break, we can break this bond even in ambient condition. Ambient condition meaning room temperature and pressure, we can synthesize ammonia. That is the biggest achievement if we consider science. So our another objective is to convert waste material to some value-added product. So here we have done a lot of project. One achievement here is peanut shell. That is a waste material, and that has no end use after that. So it's just for landfilling people are using it. Even I know some company who is producing peanut oil, peanut butter. They are confused what to do with peanut shell, because they need to dispose it off, but nobody is taking it. So we this problem came to our mind, and we converted it to one value-added product, which is called graphene. That nowadays everybody knows what is graphene. So we have successfully synthesized 2 to 3 layer graphene from peanut shell. And graphene has a lot of use, starting from energy storage material like battery, supercapacitor. Even if you think nowadays modern paint, hydrophobic paint, there are also people are using graphene. It has actually a lot of uses in any industry, starting from electrical to electronics, paint industry, battery sector, everywhere people are using graphene. So if we can, we have already synthesized it in kg scale. Now more pilot scale synthesis optimization is going on with collaboration with some industry like Kandiar Incorporation from Tamil Nadu. STEM बात पते की। क्या आप जानते हैं उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का क्यों नजर आता है? आपने हमेशा देखा होगा कि जब सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होने वाला होता है, तो वो लाल रंग के गोले के तौर पर नजर आता है और उसके आसपास आसमान का रंग भी लालिमा लिए हो जाता है। दिन भर पीली सुनहरी आभा के साथ चमकने वाले सूरज को जब हम सुबह जल्दी देखते हैं या शाम को डूबते हुए देखते हैं, तो ये रोज ही लाल रंग में बदला हुआ दिखता है। कई बार इस दौरान आसमान कई रंगों में नजर आता है, जिसमें लाल, नारंगी, नीला, पीला और बैंगनी रंग आसमान में फैलते दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों सूरज इस तरह रंग बदलता है? सूरज जब उगता या डूबता है तो इसका रंग लालिमा युक्त हो जाता है और तब आसमान भी कई तरह के रंग बदलता है। दरअसल सूर्य रंग नहीं बदलता, बल्कि ये हवा की परतों से लेकर कई बातों पर निर्भर करता है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी।
Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज